guys, this is Aditi and you're watching Aditi's Desk. Before I begin this video, I wanted to clarify something important to you guys, that medical and paramedical admission rules are ever evolving in India, and based on the latest notification, I would be slightly updating the direction of this series. And from now on, this series would be called as Medical Careers Beyond MBBS. So let's talk about today's video. आज का video is all about BSc MLT या BSc Medical Lab Technology. In this video, I'm going to discuss about what exactly is BSc MLT, आखिरकार बला क्या है ये, the updated eligibility, admission process, fees, career scope and salary, और last में एक bonus point कि how to earn bit more than the salary. Today's video it's going to be simple, factual and updated. So let's talk about what exactly is BSc MLT. आखिरकार है क्या ये एक नॉन क्लिनिकल बट एक एसेंशियल मेडिकल कोर कोर्स होता है. MLT is the foundation, the backbone of the medical diagnosis. As an MLT professionals, you work at a lab. You do the analysis of blood, urine and tissue samples, and on them you do the test of pathology, microbiology, biochemistry. और आप जो रिपोर्ट निकालते हो that helps the doctor to identify, to diagnose what exactly is the problem. So you overall get the idea that कि एक हॉस्पिटल के लिए MLT profession, एक MLT professionals कितने ज़्यादा important होते हैं. Now let's talk about the eligibility. अब eligibility को main हम बात करेंगे because it has been updated, and in this new notification it is added that you have to include the NEET UG as a basic eligibility criteria to get into the course, apart from 10+12 with physics, chemistry, biology and the minimum marks as per set by the particular university. एक हिकअप ऐड हो गया है वही कि NEET UG आपको एग्जाम देना पड़ेगा. But don't worry guys, if you are someone who is actually preparing for your 12th boards, so आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. If you have prepared well for your boards, you could easily clear the cutoff. You don't have to score 500, 600, 700 marks. You just have to clear the cutoff because it's a basic eligibility requirement that the university now has to follow according to the new notification. So now let's talk about the course duration. Course duration is around 3 years and you have to do the 6-month or 1 year of the internship with the attached hospital with the college. Let's talk about the admission process. There are two ways. One is the university level process where the university conducts its own examination or it conducts the walk-in interviews. Apart from that, there is a very well-known examination which is conducted by AIIMS. Guys, the AIIMS exam date for the paramedical and nursing has been out. Go check my short. There you could find the exact date for the exact particular course you want to get into. So yeah, these are the two ways. So I want to clarify something important to you guys, that latest official prospectus of the college you have to follow. You have to see that. Don't believe anything else, क्योंकि अभी भी कुछ universities में they have not included the NEET UG as an requirement. So always see the official current updated prospectus of the college before applying. फीस स्ट्रक्चर का बात करते हैं. फीस ऑफ द कॉलेजेस डिपेंड्स ऑन इफ इट्स गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, देन इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 2.5 lakhs for the whole duration, and for private it ranges from 3 to 6 lakh for the whole duration. It does not include the hostel, the food, the tools or the lab. You have to pay extra for them. अब बात करते हैं करियर स्कोप के बारे में. After BSc MLT, either you could do the masters or you work as the medical lab technologist. डायग्नोस्टिक लैब को आप ज्वाइन करते हो या फिर आप हॉस्पिटल के पैथोलॉजी लैब में जाते हो. सैलरी इनिशियल डेज में 18,000 to 30,000 रहता है पर मंथ. एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता जाता है. इट माइट रेंजेस फ्रॉम 40,000 to 60,000 और प्लस. अब बात करते हैं हम इसका कॉलेजेस का कि विच आर द कॉलेजेस दैट एक्चुअली प्रोवाइड दीज कोर्सेज. सो द नोन यूनिवर्सिटीज आर द मणिपाल यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठ, CMC वेल्लोर, SRM यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. अब तो सबके लिए NEET UG आपको देना पड़ेगा. सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी प्लीज डू गिव द NEET UG एग्जामिनेशन इन दिस ईयर. सो हॉस्पिटल अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डू चेक द हॉस्पिटल अटैच टू दीज यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आपको इंटर्नशिप करना है 6 महीने या साल भर तक का. अब बात करते हैं बोनस पॉइंट के बारे में. कैन यू अर्न अ बिट मोर देन द सैलरी? एंड द आंसर इज येस. इफ यू set up a sample collection center or you do the partnership with the doctors, then yes, you will earn as a business owner instead of a salary person. और फिर अगर आपका business चल गया then पैसा ही पैसा होगा.
सो गाइज ये था बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बीएससी एमएलटी का अपडेटेड एक्यूरेट गाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी रेडियोलॉजी इमेज टेक्नोलॉजी के बारे में, पूरा फुल गाइड, व्हाट आर द डिफरेंस रिक्वायरमेंट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा टू समवन हु विल बी गिविंग नीट दिस ईयर, और फिर समवन हु हैज़ टेकन अ ड्रॉप। चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फिर बेल आइकन को लिंक क्लिक करिएगा ताकि व्हेनेवर अ न्यू वीडियो इज आउट यू गेट नोटिफाइड। वो वीडियो आपकी ज़िंदगी या करियर बदल सकता है। ओके बाय, टेक केयर।